के पान बनारस वाला। राम राम भैया जी। अरे राम राम। अरे कैसन हवा? ठीक बा। अरे एक कुर्ता चाहिए थोड़ा सा। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। कैसी हो बेटी? हमारी बेटी। अरे नहीं नहीं, ठीक है दिखाइए। आपको एकदम क्वालिटी वाइज दिखाएंगे। परिवार है और इसलिए कोई है? ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग। नहीं नहीं भैया जी यही ठीक है, इसका ही दे दीजिए। कितने का दिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए का है। ओके। त्योहारों का समय इसलिए 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। Here mark price means printed price for kurta is 1000 rupees. Now rate of discount is equal to 10% given by the shopkeeper. Therefore amount of discount is equals to 10% of mark price. So 10% means 10 upon 100. Off means multiply. Mark price here 1000 rupees. So this 20 will get cancelled. Remains 10 into 10. That is 100 rupees. Now we have to calculate the amount paid by the customer to buy the kurta. So amount paid by customer to buy product is called selling price. Selling price. And this selling price can be calculated as selling price is equals to mark price minus amount of discount. Amount of discount. So mark price is 1000 minus discount is 100 rupees. So finally we got the value of selling price as 900 rupees. So इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कस्टमर को कितना पे करना है। तो इस हिसाब से आपके 100 रुपए कम होकर 900 रुपए हो गए। एकदम बढ़िया भैया जी। ठीक है इसको पैक कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा से पैक कीजिएगा। ये लीजिए। धन्यवाद भैया जी। जी आते रहे ना बेटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय बोलो अंकल जी को। बाय। थैंक यू। राम राम बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में हमने बताया सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है और आपको कैलकुलेशन के साथ भी हम बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। पढ़ते रहना बच्चों। हाँ और बच्चों जरूर पढ़ते रहना।